तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ इसमें गपशप मार के कि ये प्रोजेक्ट जो है धीरेन्द्र जनवरी में शुरू हुआ था और इसका पर्पस यही था कि कुछ कॉन्वर्सेशन स्मॉल टाउन्स पे शुरू हों और उन कॉन्वर्सेशंस में हम लोग ये चाहते थे कि बड़े शहर से परे एक पर्सपेक्टिव भी हम छोटे शहरों का करें। तो मैं मजाक में इनसे कहता हूँ कि यूं लगता है कभी कभी जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई के अलावा दुनिया बसती नहीं है कहीं। एवरी सेकंड वर्क अर्बन हिस्ट्री राइटिंग में तो नहीं बसती है। एब्सोल्युटली। तो ऐसा लगता था जैसे कि हम लोग सिर्फ बड़े शहरों में रहते हैं। सो दिस वाज एन अटेम्प्ट कि हम लोग छोटे शहरों के बारे में बात करें। हालांकि प्रोजेक्ट मेरा अपना शुरू में नहीं था, ये तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अबोहर ने अप्रोच किया तो हमने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। बट लेक्चर का पर्पस यही था कुछ एकेडमिक डिस्कशन स्मॉल टाउन्स के ऊपर। तो इस महीने हमने एक इंटरेस्टिंग स्पेस में एग्जीबिशन लॉन्च किया था। तो वो सुखैरा बस्ती ऐसा पार्ट था जो प्री पार्टीशन मुस्लिम, प्रिडोमिनेटली राजपूत मुस्लिम कॉलोनी था और पोस्ट पार्टीशन एंटायरली जो पाकपट्टन से आए जो पंजाबी नॉन मुस्लिम्स हैं उन द्वारा बसा गया। तो उसकी इंटरेस्टिंग हिस्ट्रीज और उनके ओरल नैरेटिव्स, आसपास की जो उसी बस्ती की जलाहा बस्ती थी उसके चेंज, ट्रांसफॉर्मेशंस, ऑक्यूपेशनल चेंज, इस तरह की कई बातों को रखते हुए एक एग्जीबिशन हमने लगाया है। तो 1 महीना चलता है। जब भी ऐसा कोई एग्जीबिशन आता है तो 1 महीना चलता है। तो पब्लिक एट लार्ज के लिए खोला जाता है, उनके फीडबैक के लिए खोला जाता है। तो शाम का वक्त हम रखते हैं जिससे कि जो हाउस होल्ड से फ्री होकर भी लोग आना चाहें so they can visit. So it remains open from 4 to 9. So the idea is that you engage community with its history, and in the process we will now be moving towards the 4th exhibition जो कि next month के शुरू में होगा। So ऐसे 3 पहले ये 3 हो गए and 3 will follow. So project में हमारे पास generally there are 7 fellows वो इस पे काम कर रहे हैं। 7 fellows में से 2 दिल्ली से हैं, 3 दिल्ली से हैं एक्चुअली। हमारी अपनी एक स्टूडेंट सिद्रा इसी प्रोजेक्ट की फेलो हैं और निखिल भी इसी प्रोजेक्ट में फेलो है। 2 हमारे स्टूडेंट्स हैं और इसके अलावा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा से सुखवीर हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से भी हमारे जो अमृतपाल ज्वाइन किए हैं। उसके अलावा हमारे पास एक फेलो अबोहर के ही किसान हैं जिनका कैटल हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है। तो वहाँ की जो कैटल ब्रीडिंग का हिस्ट्री था उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास ओवरऑल 7 फेलोज हैं जो एक महीना एक बस्ती कॉलोनी पे काम करते हैं और सब प्रोडक्ट जो होता है वो एक एग्जीबिशन होता है। बड़ा हेक्टिक है, ये लोग काफ़ी मेहनत से काम करते हैं। अब तक जो हमारा फीडबैक हमें मिला है वो इंटरेस्टिंग ही है कि पब्लिक एट लार्ज हैज फाउंड एन अपॉर्चुनिटी टू लुक थ्रू द सिटी, टू लुक द हिस्टोरिकल साइड ऑफ द सिटी। तो हमारे लिए तो इंटरेस्टिंग है ही, बट आई हैव हर्ड कि पब्लिक एट लार्ज इज आल्सो गेटिंग डीपली इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट। जैसे इस एग्जीबिशन में हमने क्या किया, हमने बजाय मतलब एक एग्जीबिशन के साथ साथ एक जो एग्जीबिशन उस हिस्से में बदल गया उसको दर्शाने की कोशिश किया। तो हमने खड्डी लगाई यहाँ पर, यानी जुलाहा बस्ती होती थी बगल में, बट जुलाहा नो लॉन्गर मतलब प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो हमने उनके लिए खड्डी लगाई एंड इट एक्चुअली वो इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन अराउंड द खड्डी, खेस के ऊपर कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो इमर्ज करें। तो हालांकि वहाँ पर अब खेस बनाने वाले रहते नहीं हैं, बट इंटरेस्टिंग स्टोरीज बनाई कि खेस बनाने वालों के साथ मोहल्ले के क्या रिश्ते होते थे और वीवर्स का जो एंटरप्राइज था वो पोस्ट पार्टीशन कैसे बदलता है, चेंजिंग circumstances and this and that. So that is around what we try to do in this particular project. I think now it's time. I will hand it over to Sukhveer. Sukhveer, now you can take it forward. ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ। ਇਹ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਿ ਪੁਰਜੇ ਜਦ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ 5% ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਪੁਰਜੇ ਜਦ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ 5% ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ।
बाकी अनफिट हो जाते हैं। साडी पूरी टीम डॉक्टर जोगेश ने ही, अमृतपाल, निखिल मलिक, पाउस बजाज, प्राची सतरावल सिद्रा और मैं सुखवीर, साडे सब वालों डॉक्टर धीरेंद्र दत्त डंगवाल जी का पूरी टीम वालों इस्तकबाल स्वागत साडी अबोहर हिस्ट्री टीम वालों। तो पहला असीं डॉक्टर साहब का कुछ तारुफ करावांगे। डॉक्टर साहब ने JNU ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡੀਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਲਿਬਰਲ ਸਟੱਡੀ AUD ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕਲੋਨੀਅਲ Himalayan Degradation, Colonial, Forestry and Environmental Change in India। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, अर्बन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द दून वैली। तो अब तक जैसे हम भी 3 महीने हो गए यहाँ काम करते हुए, सर का मैंने एब्स्ट्रैक्ट भी पढ़ा, तो यहाँ जैसे सुखेरों की सर बात कर काम आएगा, क्योंकि हमारा नेक्स्ट एग्जीबिशन एजुकेशन पर ही है कि एजुकेशन में ने कैसे सोसाइटी को चेंज किया जहाँ, और कैसे आपने जो देहरादून पर आपने स्टडी की उसकी एक एग्जाम्पल दी, वो एग्जाम्पलों के थ्रू हम भी काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो सर आप अपना थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू योगेश और अबोहर हिस्ट्री प्रोजेक्ट के सारे टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दे गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर सकूँ। मैं योगेश के कहने पे ही इसको कुछ ऐसा एकेडमिक तरह से नहीं बनाया हूँ, इसको सिंपल तरीके से मैं इसको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सिंप्लीफिकेशन भी है जो हम डिस्कस करके इसको समझने की कोशिश भी कर सकते हैं। जैसे हिस्टोरिकली हमें पता है कि टाउन्स एंड सिटीज कीप ऑन इमर्जिंग फॉर वेराइटी ऑफ पर्पजेज, उनका डिफरेंट ऑब्जेक्टिव रहा है। ग्लोबली अगर हम स्कॉलरशिप को देखते हैं तो वो तो बहुत सारी थेरीज भी देते हैं कि किस सिचुएशन में कहाँ पे कैसे कैसे शहर कस्बा बड़ा शहर इमर्ज होता है, कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें जो उसको फैसिलिटेट करती हैं उस तरह की ग्रोथ को, तो वो सब मैं नहीं जाऊँगा। इवन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक जनरल कैटेगराइजेशन भी फ्रिक्वेंटली होता रहता है कि शहर के क्या फंक्शन हैं, किस हिसाब से उसको देखा जाए। तो एक उसमें बहुत क्रिटिकल जो है रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर का भी कैटेगराइजेशन है कि हाउ वन हैज़ टू अंडरस्टैंड द अर्बन सेंटर्स इन इंडिया, और दे कैटेगराइज देम इन अ वैरायटी ऑफ पर्पजेज। So generally the urban centers emerge for business, trade, जो हमें अच्छी तरह पता ही है, और कई बार वो क्राफ्ट सेंटर भी होते हैं, कुछ पर्टिकुलर चीज़ के लिए हो सकता है, they become popular and then they become a main supplier of certain kind of commodity और certain kind of product, जिसके कारण वो इमर्ज होते हैं। पर्टिकुलरली छोटे छोटे कस्बे और टाउन कुछ सिचुएशन में वो बड़े भी हो जाते हैं, दैट आई एम नॉट गोइंग इनटू कि किस सिचुएशन में ऐसी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा कई बार पिलग्रिमेज सेंटर होते हैं, वो बहुत बड़े भी न बने तो दे रिमेन इम्पॉर्टेंट, और कई बार ट्रेड एंड बिजनेस also develop around them. So these were some categories. Administrative center were always there historically. वो अगर हम मुगल पीरियड में भी देखते हैं, मिडिवल में कैसे वो इमर्ज होते हैं, फिर वो कई बार इमर्ज होकर डिसअपियर भी हो जाते हैं। तो पर्टिकुलरली आफ्टर कमिंग ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, हम जानते हैं कि किस तरह से ट्रेड डेवलप होता है, नई कमोडिटीज़ का ट्रेड होने लगता है, देयर नेटवर्क्स आर डिफरेंट, the routes those trade takes are very very different. So the many towns, kasbas emerge around those places जहाँ पे वो rural area से इकट्ठा होगा सामान, फिर that will be further supplied and then there's a link and processes through which it used to pass through. So even in the early colonial period, 17th and 18th century, must lot of reshuffling possibly taking place in terms of which टाउन इज सर्वाइविंग और कौन सा टाउन एकदम डिसअपियर भी हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल किस वैली कहते हैं कि रेलवे के आने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, बहुत सारे टाउन और सिटी जो थोड़ा हट करके डिफरेंट लोकेशन में थे, अगर ट्रेन कहीं और से गुजर रही है तो देन द सिटी शिफ्टेड एल्सवेयर और द बिकेम द मेन फोकस और द ओल्डर सिटी डिसअपियर। फॉर एग्जाम्पल उनका एक स्टडी है
खारा सहबाद पे, जो कि इलाहाबाद के पास एक छोटा सा कस्बा था, which was very important from his point of view in the pre-European trading system period. और वहाँ पे जो लोकल चीफ जमींदार और जो भी रहा होगा, मे भी पहले जहांगीरदार का वो रहा होगा, तो दे वेरी डिफरेंट सेट ऑफ पीपल हु वर एंगेज देयर. बहुत सारे कायस्थ वहाँ पे काम करते थे और अदर मुंशी और अदर टाइप के लोग थे. धीरे धीरे इलाहाबाद इमर्ज एज ए इम्पोर्टेंट सेंटर. Railway passed through this, and then the whole community which was there, particularly the people who were literate और जो पहले रिकॉर्ड रखते थे उस तरह के जो लोग हैं, those community are shifting to Allahabad. Or that one can tell the similar stories happening in the different part of the country, that how the new alignment is happening, how the new center are emerging, how sometimes old are becoming useless and no longer remain important. That also happens because of the political shift and all that, which resulted in a different kind of context where the change then happens. Now, as the British rule made its foundation stronger in India and it started spreading more and more in the 19th century, when the control was expanded, they started their own administrative structure, which by and large also followed now in the modern period, even after independence. So entirely new set of, some of old may have become the center again. I'm not saying that all the old possibly disappear and the new came, but many studies like Islam's study of Bengal, Mufassil towns or Qasbas, or when Bailey used various kind of terms for them, because in even urban definition in early period was so complicated or difficult, क्योंकि कई बार जो even market होते थे वो they were not permanent but were temporary. वहाँ पे जहाँ पे traders will come at certain specific time and the buyers will come in specific time, and then this. One of the best example of it were the Kumbh Melas. I have seen description of Haridwar in the Kumbh Mela, which otherwise is a small town at that point of time. But when the Kumbh Mela used to happen, there was a huge market. At least the description so many of account do not tell the numbers, the people coming, but all parts of the country, people coming, कोई कुछ खरीदने आ रहा है, कुछ बेचने आ रहा है, तो kind of exchange is happening. So those temporary things were also there, happen frequently. But with coming of the British, more and more established urban centers are emerging, and some of them are administrative centers. Because as we know that for the British, revenue collection was a very center of it. And we have, any historian have seen that at the end of the 18th century, roughly 20 to 30 years were spent on understanding that how the revenue system will be set up. और फिर कहीं पे वो फिर परमानेंट सेटलमेंट आ रहा है, फिर उसमें प्रॉब्लम हो रही है. इवन परमानेंट सेटलमेंट वाज emerged after experiment of 20-30 years or so. So revenue was so central that they wanted to facilitate it. That also applied to the Mughals as well. But here the system possibly was different, more bureaucratized and permanent bureaucracy kind of thing that we know in the modern states and so on. So ये जो center बन रहे थे, the Pargana and district headquarter became very, very important. And Islam's works and very others works tells that ये जो छोटे से थे, these were basically sometime on the rural urban fringe है, कहीं पे rural ही जैसा है, धीरे धीरे urbanized हो रहा है और एक दो ऑफिस आ रहे हैं, and then it's slowly growing, and then they give the picture of it how it is happening. So these Pargana headquarter, for example, or then district headquarter in some cases as well, in a very remote and distant places, were the places where they set up certain bureaucracy. And the Pargana headquarter, for example, will have 2-3 officials. They will have some senior revenue officers, sometime additional magistrate or joint magistrate or tahsildar or 2-3 other officials will be there. Sometimes judiciary related officers may be there, or sometimes magistrate power were with these people as well. So most of the cases, as the new land revenue system coming up and then many disputes arriving, so those people are coming to them these areas.
So litigants are coming there, and when the litigants are coming, then you need a several set of people in those places. So there are attorneys, there are petition writers, there were lawyers who will fight the case and so on. So these set of people are there, and revenue officials, of course, were there, sometime lower level as well, who will be certifying the documents and so on. So a new set of people, that is becoming a constant feature in these parganas, which we are basically discussing. And I'm sure that Abohar must have been seen that phase and then transition occur in course of time. So एक्चुअली इन दिस लेक्चर मैं एक पहले इनिशियल फ्रेम कर रहा हूँ, जनरल फ्रेम ऑफ डिस्कशन, और देन आई एम अप्लाइंग दैट टू द देहरादून. उसको मैं फिर अप्लाई कर रहा हूँ उसमें कि कैसे वो फिर कहाँ पे डिफरेंसेज है, और हर अर्बन सेंटर का अपना कहाँ पे डिफरेंट हो सकता है हिस्ट्री, और हाउ they may have taken different trajectory over the times. But many of these parganas and district headquarters have a very similar kind of things which was happening with them. So these litigants who visited there, to support them, some shops started coming up. Then some kind of eateries will come. अब वो दिन भर वहाँ पे रह रहे हैं. कई बार they have to stay for 2-3 days for their case, or pleading to officers. Lawyer is trying to find out how to settle their dispute and so on. So these small things coming, these look so small to us now, but those were crucial in shaping the towns and making it slowly larger and larger, and they're taking a different kind of structure over the years and getting transformed in the process itself. So they have small shops, possibly meeting their basic requirement. दिन में खाना क्या है, ये क्या करना है. Eateries जो उनको कुछ basic food दे रही होंगे दिन में. Or in some cases, there are then emerging more and more people coming from rural area to there, and they have to stay 1 night or 2 nights. Small sarais, or one can say 1-room hotel, or this kind of dharamsalas are emerging in these places where people can come and stay. And if these become durable, and along with the official work that is being performed, though many times for trade and business purposes, there were other towns who will serve that purposes. But sometimes even these can compete with them for local requirement. The one business and trade center are those which deal with the commodities which are going to different long distances. Salt is one example with Tanuja know. Cotton was Bailey's work, so that how the cotton, or even one can say indigo, opium, we know that opium ki kahan se ja raha hai, फिर कैसे Bombay emerging, so important center of the opium. So all these, some are the business which are of larger in nature, or those places which are serving a role of a transitory kind of thing. They are just supplying a part of the supply chain, of a long chain. But these are not like that. These are the small, isolated in that sense, and not the core business center as such. But जैसे ये छोटी business में आपको बता रहा हूँ, litigant आएगा, अब वो इतनी distance से आया है, they will love to purchase few things. Maybe they purchase some clothes, some food item which they may need, or which is not available in the villages and so on. What basically is being suggested, that these places slowly acquire larger and larger shape over the times. If you look at the history of the large number of the towns today, they have a similar kind of history, except those which are longer history, and like Saharanpur in neighborhood of the study where I am doing was a very important craft center in the Mughal time as well. And that remained like that for some time, trade or business as well happening from that region. And it survived, and it still is very important in that sense for a certain kind of trade, certain kind of business, or maybe certain kind of product still there. Or there are places, if you look at Aligarh or other places where there are certain specific things they used to do, or some of those things may have changed over time. जो वो commodity बनाते थे. I have not gone into so much detail of that, but a scholar have written about that. कैसे कैसे उनकी various commodities they specialize in those, for which they remain a very important center all along. So these places which are Pagna headquarter or district headquarter will be slightly larger from them, will have then smaller shops which will be feeding into their local kind of demand.
maybe they are purchasing salt, maybe sometimes sugar or this or that, if that is not available elsewhere, or maybe since they are coming here, they will be doing this. So those kind of services are provided by these small towns. However, this is not the issue which I am dealing with mainly. What I am dealing that in some of these places, definitely those which became municipality later on, then municipality will had the responsibility of opening educational institution, and they will open a school or so on and so forth. But even otherwise, in these small kasbas or towns, small towns, education institution, छोटे से school, to begin with primary schools, begin to come up. Some who gain more importance and become larger, they may get middle school, and which are extraordinary, maybe the district headquarter or which is able to attract large number of them may get secondary school or so on. These schools became very, very important, and that's the focus of my this talk basically, which is a part of which is a larger project, and there's a small bit of that in this kind of work. So what is happening basically is that now education is acquiring importance, which was for certain classes were already there. Maybe they were on the forefront of acquiring this new education that British were providing now, with their creating own syllabus, own kind of board exam and so on. But aspiring parents who want their children to go for white collar jobs, which may have certain kind of prestige attached or certain kind of mobility also attached to it, are becoming important. And the parents would love to send their children not only from that kasbah, from nearby places, they will send it. And if there's a middle school or slightly larger one, secondary school, then parents will send their children there. Or if we look at the Sumit Sarkar's Modern Times, he says that even communities and caste group open their own schools, particularly after Ut Dispatch in 1854, which facilitated grant and aid from the government. You can get a little bit grant from the government, you can collect some chanda. The education efforts in the colonial period, for substantial period, I think were also based on this kind of chanda ikatha karke. We know Madan Mohan Malviya did a lot of collection for this Banaras Hindu University, and there are instances at the local level. One can collect a huge number of such examples, where then communities which feel that, well, we need education for our children, they will construct a school, they will construct middle school. There were a huge demand. If you go to the local press, there are demands and demand for high school, because matriculation was very, very important degree in a way at that point of time. And if somebody matriculate, is as good as graduate and postgraduate of today, from white collar jobs perspective and point of view. So in a way, these were the places where this education linkages are developing and growing. So we see that these schools, which may be primary school, these small Pargana headquarters, then in the middle school, and even there are instances with slightly district headquarters or so, the hostels were made as well. And these issues were very, very crucial in the big cities and town as well, because as Sumit Sarkar also argued that beyond the school, you have to go to the largest cities, where there's a higher education available. And in that kind of scenario, if children has to move to places where they require to stay, then there are various kind of arrangement that emerge. Calcutta's example are given several of them, and there are others example, small places as well, where then you require places, because I'm still talking about the 19th century or late 19th century or even early 20th century. Food is very, very important. Where you are consuming the food, it's not like today that we can go to anywhere and pick up food or eat.
there were several restrictions on consumption, what you have to consume, how you have to consume, who has to cook food. Very casteist way of looking at it, but that's what was the reality. So if you look at that kind of literature, newspaper, discussing those kind of issues, or sources or other articles which I've read and all that, they say that, well, sometimes arrangements were made that, well, 20 people, 20 students will stay in this particular caste group student will stay in a particular place, maybe 1 or 2 big halls, or maybe some rooms given, and then they will be provided food as well. And it has to be ensured that the food is that cooked by certain set of people. Or what I'm saying is that this education itself is a big business right from that time onward, because this is providing a kind of social mobility, and this story starts right from those small towns, which may be providing primary education, and some maybe just remain satisfied with that. Some would like to move forward, and then they will go to middle schools, district headquarters, or maybe some for matriculation, more higher. And if somebody goes beyond that for graduation and all that, which was available only in the last presidency towns, or later on by the beginning of the 20th century, more cities had those kind of educational facilities, and then people moving a long distance to get that education. So what we see basically here, what I'm trying to say and understand is that even in these small towns, parganas, mofussil towns or kasbahs or whatever you call them, a certain set of professionals started to be living together. So you will find professional like lawyer, teachers, doctors, maybe using traditional medicine, journalists slowly, as the newspaper coming, not only the large newspaper, but you see in India is a virtually explosion, one can say, the revolution in publication of. Even if you go to the small town, you will find they are publishing 3-4 local newspaper, which have a very local kind of circulation, but they are there. That's how the middle class is emerging, and so-called intellectual who are then having public space, creating a whole range of debate or discussion happening. So even these smaller towns have lawyers, doctors, teachers, journalists, small or lower level bureaucrats and clerks who are working in various offices and all that. And as we go to larger town, and then the cities, and these people, the number of these people will grow in larger and larger. So on the one hand, there may be lawyer working in the high courts, and there's a lawyer who is working in a very lower level of Pargana court, because litigants also come there, so they have to serve them as well. So as the more and more people visiting these locations of Pargana and district headquarters, we find more and more people of these service provider, one can say them, including the business groups which I discussed, eateries, hotel, this or that, their number is growing. That's how the towns grow further and further, depending on how many people are visiting to that place. This will decide how they will grow in course of time. So give me a second. So, so what I'm basically suggesting, there is a request for you to keep it bilingual. I think, I don't know whether you read the message or not. अच्छा ठीक है, मैं हाँ सर मैं भूल जा रहा हूँ शायद बीच में. I'm sorry. Thank you for reminding. तो मैं इसमें क्या आर्ग्यू कर रहा हूँ, बेसिकली मैं ये आर्ग्यू कर रहा हूँ कि जो ये छोटे कस्बे हैं और शहर हैं, इनकी अपने आप में एक यूनिक भूमिका है, जिसको कि हिस्टोरियन बेसिकली जो अर्बन हिस्ट्री पे काम कर रहे हैं, शहरों की हिस्ट्री पे, उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया है, और बहुत कम लोग हैं जो उसको बहुत ढंग से अंडरस्टैंड करके उसके बारे में लिखते हैं. प्रोफेसर रविंद्र कुमार का आर्टिकल मुझे याद है लाहौर के बारे में. इट्स सच ए नाइस आर्टिकल विच ड्रॉ ए पिक्चर कि कैसे वो शहर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कैसे न्यू क्लासेस आ रही हैं, कैसे रेजिडेंशियल एरियाज रिफिक्स हो रहे हैं, कैसे colonial structure has its own, for example,
एंथोनी किंग आर्ग्यूज कि कैसा होना चाहिए colonial अर्बनाइजेशन का नेचर ही डिफरेंट है, उसमें हर शहर 2 हिस्से में बटा हुआ है, एक ब्रिटिश डोमिनेटेड civil lines or other areas, or that is a native town, which may not be that much applicable to the small town and kasbas, but that they say that it became more and more the features. But basically, if you look from the perspective of the people who are coming to those areas, as I look at the Dehradun, which I will not be going into that detail here, but I found very interesting how the people are moving, कहाँ से आ रहे हैं, किस objective से आ रहे हैं, and then they become so important and crucial part of the city and town, and वो उसका बहुत contribution कर रहे हैं और क्या चीजें उसमें emerge हो रही हैं, वो मैं अभी उस पे आ रहा हूँ. तो मैं इसका second part देहरादून के बारे में बता रहा हूँ कि इस कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने अभी तक आपको डिस्क्राइब किया, ये शहर कैसे इस तरह से इमर्ज हो रहा है, और एक और इसके और जो मैंने अभी तक डिस्क्राइब किया छोटे शहर का, उसमें और इसमें सिमिलैरिटी है, और जैसे समय बदल रहा है देहरादून एक दूसरा कैरेक्टर एक्वायर कर रहा है. तो इसी तरह से बहुत से शहर, ये तो बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर ले रहा है. मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे कैरेक्टर ये ले रहा है. बट अगर हम अन्य शहरों का भी देखें तो पॉसिबली हर शहर एक अपना डिफरेंट कैरेक्टर ले रहा है, इवन इफ इट इज इमर्जिंग फ्रॉम द स्मॉल टाउन विच मे हैव दिस इनिशियल फीचर ऑफ Pargana headquarter or district headquarter or certain kind of people, and then it growing and acquiring very different things. So maybe trade and business is the one aspect of it, but not the only aspect of it. Which groups are coming, whether the people are coming for education, and how other things are happening in those places is a very interesting, which need to be explored more clearly to understand that how the modern India is emerging from those things. So coming to Dehradun, I will try to be as brief as possible, but in a way before British came it was not कस्बा शहर कुछ भी खास नहीं था. दो लोग क्लेम करते हैं कि पहले भी था, कुछ था, और इसका जो नाम है that comes from Guru Ram Rai, who was the eldest son of Guru Har Rai, 7th Guru. और राम राय को हर राय ने औरंगजेब के कहने पे उनके कोर्ट में भेज दिया था. और there's a very interesting thesis which I was very recently reading or examining rather, जिसमें इसको बहुत ही interestingly उसने इसको डिस्प्ले किया. But anyway, I'm not going into that. But क्या हुआ कि राम राय could not secure the गद्दी of गुरुशिप, और वो somehow रेस से बाहर हो गए, और उसके बाद he decided to move to this Himalayan region of Doon Valley, where Aurangzeb asked the local Raja of Garhwal to give him some land. A huge land grant was given to him, and Guru Ram Rai came there in the 17th century. इसीलिए Doon is basically a name of valley, but Dera has come from that Guru Ram Rai, and there's a beautiful Gurdwara or temple of Guru Ram Rai there. Or in fact, Dehradun cannot be imagined without Guru Ram Rai, which I'm not taking into this lecture to that extent, but that people have worked on that, and it's a very interesting place, a very interesting cultural center where the people from Haryana, Punjab, or other part of the northern India every year visit for one mela, which is known as Jhanda Ka Mela, when the flag is raised and so on. And that is the core of this town from long back, though the nature of that fair has changed over time. That is the origin, possibly, if we see the more recent time of the town. But it remained a village even when Guru Ram Rai का दरबार भी था, तब भी ये छोटा कस्बा ही रहा जब तक कि ब्रिटिश वहाँ पे नहीं आ गए. And British came here in 1815 after Anglo-Gurkha War. When the Gurkhas were defeated, they had controlled large areas of Tarai and some Himalayan regions because of expansion of Gurkha power in late 19th century. And then British controlled all these territories, large number of them, including the Shimla, Mussoorie, Nainital, and all these places became very different, as I will be describing some of that. So Dehradun was not much did not have much population at that point of time, because many hill people did not see it as a healthy, because it's a kind of a tarai at that point of time. There was I'm not going into geographical region that why it is that.
वो मार्सी लैंड और स्वैम्प वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि the rivers come, seasonal rivers or seasonal streams comes, and the water hardly escape because there's Shivalik range which enclose the valley at the foot of the Himalaya, and which did not allow water to escape so easily. However, it was a very green valley with sal forest and all that. So travelers who are traveling through this valley in the 18th century or early 19th century are praising it for its natural beauty. But still, it was from European point of view unhealthy because of malaria. Even from Indian point of view, one can say, because hill people did not love to come down, because most of the time it was a part of the Garhwal kingdom, though they were tussle for it. Many times it moved to Mughal control as well. Mughal got timber from there or so on. There are references like that. And however, when Missouri became, as I just gave you the reference, as the British got control of these territories in the 1815 onward, Europeans started looking for the areas where Europeans can find themselves comfortable climatically. So, सारे hill station उसमें emerge होते हैं. Shimla became very, very important, later on imperial capital. But the other hill station as well became very important. Missouri was searched, and Missouri became very important hill station. By 1840s or even 30s or 40s or 50s, लोग Europeans are coming there. वो बेसिकली अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए आते थे, बिकॉज वो इंजर्ड हो जाएं या अनहेल्दी हो जाएं इंडियन समर में, तो वो दे escaped from here, soldiers or other people as well, and then they will stay for 3 months, 4 months, 6 months in Missouri, and then they will recuperate and then go back to their duties and all that. In that process, lot of Europeans now came there and noticed Doon Valley, which earlier only travelers were noticing and mentioning, and very few people may be passing. But as Missouri emerged as a very, very important hill station by the middle of the 19th century, large number of Europeans passed through Dehradun, because Dehradun and Missouri are just 30 kilometers. You have to come Dehradun and then to go to Missouri. So they will stay here on sea and notice it. Another crucial development that happens, as generally noticed, कि ब्रिटिश की लगातार नजर नए नए प्लांट्स पे थी. Botanical Survey of India was one of the first institution which was created after Survey of India. तो इसी तरह जब उनके बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन थे जगह जगह पे, सहारनपुर में एक बोटेनिकल गार्डन था बहुत पहले से, एंड दे वर लुकिंग कि कौन से प्लांट कहाँ उगाए जा सकते हैं, क्या क्या. उनको लगा कि जो चाइना से टी आ रही थी, दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द हिमालयन बेल्ट. आसाम में तो हुआ ही बड़े स्केल पे, पर इन सारी बेल्ट पे भी उसका हुआ, और उसके कारण बहुत सारे वो हुए, उसमें मैं अभी नहीं जा रहा हूँ. लेकिन दून वैली वाज आल्सो, बिकॉज वेरी क्लोज टू सहारनपुर, वाज सीन एज अ पोटेंशियल लोकेशन वेयर द प्लांटेशन ऑफ टी इज पॉसिबल. और as I told you, very little part of the valley was already being cultivated. Also because in the late 19th century, late 18th century, so many war here, many people coming to loot this area, or it was in a way frontier kind of region at that point of time. British bhi hain, aur bhi hain. There's a powerful Sikh state in Punjab, and there are other states here. There's a in the UP side, which were constantly struggling for controlling various states, including this one. So बहुत कम लोग थे, हैबिटेशन वाज लो, सो दे थॉट कि इसको बहुत ज़्यादा कल्टीवेट किया जा सकता है. बहुत फ्री ग्रांट्स दी गई यूरोपियंस को. बाय द 1850s और 1860s बड़ी तादाद में यूरोपियन प्लांटर्स यहाँ आए, और many of them died, could not survive, but some of them remained there, and a significant number of people became the planter. दूसरा क्या हुआ कि जैसे मसूरी became larger and larger, and as we know, a large number of people will come there during the summer. उनको बहुत लोगों को लगा कि it was a fertile valley, but unhealthy valley. So I'm not going into that, how British try to make it healthier by ड्रेनिंग दो स्वैम्प, उनको सुखाना, उनको वो करना, और बहुत एग्रीकल्चर एक्सपेंशन करने की कोशिश की गई. तो इन बहुत से यूरोपियन विच दे कॉल्ड जेंटलमैन फार्मर को लगा कि हम यहाँ पे फल और सब्जी उगा के भी मसूरी सप्लाई कर सकते हैं, विच वाज अ वेरी गुड मार्केट for them, because a large number of people will be in any way coming, Europeans coming to Missouri, and they are willing to pay good price for the fruits you supply them, for the vegetable you supply them. A tea was already there as one of the options.
cutting this story short, by the 1860s or 70s, there were quite a number of European planters in this valley. Those have made this valley as their home and cultivating there, or some of them are supplying. At the same time, what is happening? As Canadians worked so that all the hill stations became the center of education for Europeans. A very high class of Europeans who were seniors, civil servants and army officers who were very well paid, they will preferably send. India was not seen suitable for upbringing of their children. That's what it is argued. And to escape from Indian situation, they will send their children home. But those who cannot afford, the lower, slightly middle level of officials and so on, who were employed in a very large number, they then started sending their children to hill stations boarding school. A number of boarding schools started coming for this purpose. And Mussoorie became the most popular. If we go according to what मैं उसका first name कैसे बोल रहा हूँ अभी. So Canadians worked so that some of the best boarding school came up in Mussoorie. और उनमें से कुछ बोर्डिंग स्कूल्स, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लंबा सा हो जाएगा. There are still there, very prestigious, and people still love to send their children there. And some of those schools used to come to Dehradun in the winter because Shimla, it was very cold there in the winter. तो वो देहरादून में आएंगे. Slowly देहरादून में भी कुछ ने खोलना शुरू कर दिया स्कूल को. और the first set of school came missionaries के द्वारा वो खोले गए. उसमें American missionaries were on the forefront of opening those schools. 1854 for boys. They are still, those schools are still there with different name, different management. The AP Mission School is the very center of Dehradun city, and there was one school for boys, one school for girls, basically for Indian Christians. But other also made entry into them, and then other schools started coming slowly into this town with passing of time. And I cannot go into much detail of that because I have a very limited time. उसके बाद ये धीरे-धीरे school education का center बनने लगा, not only for the European, now Indians. I am also suggesting here maybe a problematic that Indians are copying the Europeans in a variety of ways, which I am coming in short while, other practices as well, but this sending to boarding school. So Dehradun में भी school खुल रहे हैं, boarding school भी हो रहे हैं in course of time, and I'm not going into detail of that. A good number of schools are still there, where still the people send their children to study, assuming that those are very prestigious to send their children there. And then Doon School also comes as a model to represent an Indian schools of the same high standard of boarding culture, where S.D. Das, if I am correctly pronouncing his name, he was a law member in the Viceroy's Council, and he started mobilizing people for this Doon school. And 1935 he opened this school with support of government. Viceroy opened that in that year, and a very prominent teacher from England. But I'm not going into the details where exactly he came. He became first principal. What I'm trying to say is that with those school coming from Mussoorie to Dehradun, slowly Dehradun itself emerged by the end of the 19th, the beginning of 20th century as a center of school. And I'm not going into that. Even some of the elite of that period used to go there and study in those schools, and became very, very popular. Another thing which I will very briefly refer, that somehow the European loved this place. And I'm not going into detail of that. With passing of time, many imperial institutions started coming up. The first person who, in spite of government's opposition, stayed here and made his headquarters was George Everest.
जिसके नाम पे एवरेस्ट पीक का नाम डाला गया है. He was a surveyor and he was a Director General of Trigonometric Survey of India. तो अपने सर्वे करते करते he had an office in Mussoorie initially. And he wrote to the government of India that I want to make my office permanently in Mussoorie. He has a house. अभी तो सरकार उसको बना रही है एक tourist place. अभी recently I was reading it some time back. So Everest wanted to stay there whole year, but the government of India policy was that not to allow it. And it was written to him that no, you cannot stay. So that may become rule for the other will also love to stay in the hill station, though it's very cold in the winter, but they would have loved to stay there rather than coming if that option is given to many. So they refute this request of Everest, and then Everest requested them to let me be in Dehradun. So he started his office in Dehradun, which slowly grew and became very large institution. And during the Second World War, when the Survey of India office was in Calcutta, when from the Burma, the forces, Japanese forces or Indian National Army, whichever were moving towards Calcutta, they thought, because mapping is very, very important, and they thought that if they capture this place, so immediately during the Second World War, around 43, 44, 45, the Survey of India was shifted to Dehradun. So now the main office of Survey of India is located in Dehradun, which also played a very important role. But apart from that, several other institutions came towards the end of the 19th century in this place. The most prominent among them were, for example, when the Forestry became important and Forest Acts were passed and so on. So first college to train Indian in forest management, rangers particularly, lower bureaucracy. Higher bureaucracy was trained in England, France, and Germany. They were trained in Dehradun, where the Forest Rangers Training College came in. And later on, it was upgraded. The college remained there. Another institution was opened, which was known as Forest Research Institute. And this huge building is there for the Forest Research, which came in the 1930. But it was open. Forest Research Institute was opened in 1906. And it became a very important institution for training. Later on, Indians started to be trained into it in 1920s or so on, but for research on the forestry and so on. Along with that, when Viceroy used to stay in Shimla, the Viceroy bodyguard used to stay in Dehradun. I don't know, maybe they didn't have space in Shimla or whatever, maybe the reason for that, not very clear to me. I could not find the reason for that. But when the Viceroy used to be in the Shimla, from roughly from March to October or April to October, the Viceroy's bodyguard, a huge cavalry, used to stay in Dehradun on the Rajpur Road, where it's still its place is called as a Viceroy bodyguard, and it was there. And then several other institutions comes up. The most prominent among was the Prince of Wales Royal Military College, where it was believed कि जो royal princely estate है उनके बच्चे या और जो elite institution है उनके बच्चों को military training देने के लिए वहाँ पे कॉलेज बनाया गया, जो बाद में अब इंडियन मिलिट्री एकेडमी के रूप में, उसके नाम भी बदलते रहे बीच बीच में, और भी कॉलेजेस खोले गए, which I am not going in detail, but that institution became important. And already cantonment was there in Dehradun right from the beginning when they came in 1815, and more cantonments were open. If you look at the early 20th century, you will find that geographically 40% or 30% area, geographical area of the valley, not of the valley, of the so-called township was basically the cantonment area. So there are endless institutions which are coming, which I will not list them, so many. Crucially, two more I am referring to because they were also related to education, like Ranger is education. Forest Research Institute is basically relating to education. This military academy is also related to, in a way, for education. And then the railway officers training institute came there, which later on shifted to Baroda, I think 1940s or something. That was also open there. And another institute, which was a very crucial institute at that point of time, was the X-ray Institute was opened in Dehradun. One can simply ask today, what is so important about the X-ray? X-ray was new invention at that point of time,
and every doctor that was practicing need to be trained into X-ray reading or whatever is it, and all of them used to come there for short duration of training where they will be taught not possibly how to X-rays to be made, but possibly how to read it. But this institute remain very, very important. So why I am telling all this story of this, possibly I am now coming to the end of this lecture, because I have a lot of things to say, but I don't have time. Why I am bringing this story of this institution, this is linked with the education. What made Dehradun different from the towns which I was discussing with you previously is that Dehradun no longer remain definitionally that kind of town. Though in the size it remained the same. Its population did not grow much until the early 20th century. When the railway came in 1901 to Dehradun, that brought a large number of people. As I told you, Europeans were already there. Surprisingly, it became a best destination, at least the record suggests that, for European pensioners to settle down there. And those people remained there for many years. And I was just looking for the answer that why many of those people remain there. So some of the people say that after retirement and old age, many of them did not want to go to England, कि वहाँ आपको sun नहीं मिलेगा. They wanted a bright place in India, जहाँ पे शांत हो, अच्छा हो, बहुत गर्मी ना हो. दून वैली की खूबसूरती ये थी कि ना वहाँ अब की बात नहीं करो, तब की बात ना ज़्यादा गर्मी होती थी, ना ज़्यादा ठंड होती थी. Mussoorie is very close by. If you feel थोड़ा temperature बढ़िया, तो you can go to Mussoorie and so on. So that place became attractive. And initially it was the European pensioner, but later Indian pensioner also started coming here in the large number. However, that is not my concern. My concern is here, these imperial institutions for the lower positions and the middle positions. A large number of educated Indians started coming in. And Dehradun there were other, I'm not comparing Dehradun with the large cities. Obviously, they will attract the people from far and wide regions. It's whether presidency towns and other that, but even other cities, maybe even the Kanpur or Agra or maybe Surat, and all of those attracting people from a long distance. But Dehradun was small and remained small for a very long time. Even till independence, its population was much, much lower compared to the cities, big cities, or even the medium-sized cities. Even in the Meerut Commissionary, of which it was a part, it was the 6th number in the number of population, in terms of population. But the people came from all parts of the country here. And 2-3 things I will quickly say. एक तो इन जगहों पे जॉब करने के लिए, चाहे वो FRI हो, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे और जगह हो, even Ras Bihari Bose, who was said to be the part of the conspiracy to kill Lord Harding, and who then escaped to Japan and remained active there, was in FRI. And several other people, Raja Mahendra, क्या नाम है इनका पूरा, मैं अभी भूल रहा हूँ, Mahendra Pratap, who formed Indian government in Afghanistan. He was in Dehradun for quite some time and then escaped and went to Afghanistan. And after that, when the British rule came to an end, he was in Dehradun. Another issue I am just saying here is that with passing on the one hand for educated classes, then education institutions are growing. And Arya Samaj is playing very, very important role. The DAV school and colleges is coming. DAV College, Dehradun became a very important education center for matriculation and afterwards. And when it became 10+2, and later on the college which can get graduation, people from different part of the UP, from Haryana, from Punjab, or hills or coast were coming there for education. And it was becoming important for matriculation and beyond. And for the English primary education, it was already a very, very popular destination. And the whole range of profession, the people is acquiring obviously a cosmopolitan character, because if you look at the statistics, there are Tamil speaking people, there are huge number of Punjabi speaking people, huge number of speaker of other languages, which generally are unusual for a small town, where small towns very definition is that
the people from hinterland come to that particular place. This does not apply to them. So on the one hand, Dehradun come in the category of the small town, which I was describing in the first part of the lecture. But then it moves in a different category as well, where the people are being drawn from in different regions of not only the province, but of the country as well, coming here for very different kind of jobs, white collar jobs, as I told you, the education institution facilitating them. And not only the main people who are working there, they brought their families here who got education in these institutions, and then they aspire to move forward. The other thing, quickly I'm summarizing it because I was not supposed to speak so long. Two things are happening. Dehradun frequently being referred as a place where the holiday makers are coming, and Indian elites started to moving to Dehradun. Very surprisingly, a large number of princely estates started building their houses in Dehradun. One can simply ask the question why. It was because क्या time पूरा हो गया है? बस मुझे 5 मिनट और दीजिए, मैं just I'm ending in 5-7 मिनट में. लार्ज नंबर ऑफ हाउसेस पंजाब के पर्टिकुलरली बहुत से स्टेट के नावा और बहुत सारे स्टेट के यहाँ पे घर थे. आई थिंक पटियाला का भी घर था. और ये इसका कारण ये था कि बहुत सारे ये लोग बहुत सारी फैमिलीज पर्टिकुलरली छोटी प्रिंसिपल स्टेट, दे कुड नॉट अफोर्ड टू बाय हाउस, और दे वर रिजेंटमेंट अगेंस्ट दीज पीपल बीइंग स्टेइंग इन परमानेंटली इन मसूरी और शिमला और इवन नैनीताल. और मसूरी की ब्यूटी ये थी, मसूरी वाज द ओनली हिल स्टेशन which was not official capital of any province, or obviously Shimla was of the entire empire, but Nainital was for the United Provinces, or Darjeeling was for the Bengal government, but Mussoorie was not that. And Mussoorie therefore attracted Indian elites as well, who can visit there, stay in the summer, or some of them would love to make their houses in Dehradun, where you find a large number of example of it. And for example, if you look at the example of the Punjab, Ranjit Singh's son Dalip Singh remained in Mussoorie for some time when after 1948, after the second battle, and Rani Jindan also remained in Mussoorie for some time. Then Dalip Singh went to England, but Raja, who got the title of later, Lala Singh, who was a wazir and was close associate of Rani Jindan, was initially in Agra and then shifted to Dehradun, and his descendants remain in Dehradun for till recently, and they were very important player in various kind of clubs, various kind of social activities, or in other kind of things. So he had 3 sons, Ranveer Singh, Balbir Singh, and Tegh. There are still roads in their name there, and they started various choti-moti factories and other kind of economic activities in this region. And similarly, when Afghanistan, you know very well that how many Anglo-Afghan wars took place. And many times when the existing ruler were displaced, they were brought to Dehradun. Sometimes they remain also in Agra or Dehradun, but many of them, there was a Afghanistan palace kind of thing in Dehradun, where these people and their family came and lived. And then in Nepal, they were uprising various times when the rulers, new rulers were coming, or this or that. I'm just wondering, I couldn't see the logic that why it was happening, but this was happening. So Nepal's various ruling families, people will come, some of them were in Rajpur or some Mussoorie or some Dehradun, or they were settling. And then Indian elite, just take the Nehrus. Motilal Nehru was frequently visiting Mussoorie. So was the Jawaharlal Nehru. And Jawaharlal Nehru has a close association with it. I'm just giving their example because they are well known, but all the elites, several elites used to visit Mussoorie, those who can afford to go there during the summer, unlike Shimla or unlike other hill stations where they will find bureaucrats, European bureaucrats, military officers who have a race was of course a very important component, but that did not reflected that much in Mussoorie, which was slightly open and free place compared to these other locations. So which brought a large number of them. So what I'm basically suggesting, a different set of elites coming, educated class coming, middle class people are coming for white collar job, and people are coming for education, boarding school are becoming, and it is becoming
one of the place which is becoming a foundation place for emergence of the middle class in India. I could not go into other details. Then those middle class becomes very, very important, whether we look at the Douglas Hayes work on Surat, whether we look at very interesting work of Leonard on Rajamundry, a small town, and acquiring very significant, how the municipality politics shifting from business and traders to the literary classes, to the lawyer, to the doctors, to the teachers, and so on, who are playing more active role by the beginning of the 20th century. And this class, which we know played so important role also in the national movement, these towns, small town, as they now close, have a significant role in this entire process, which very little reflection has been done by historian. I'm not denying that they're not done. I'm not saying that उन्होंने बिल्कुल नहीं किया है, लेकिन उस तरह का काम नहीं हुआ है जो होना चाहिए इस ट्रांसफॉर्मेशन, इस प्रोसेस में, इस क्लास फॉर्मेशन में, सोशल मोबिलिटी में जो रोल इन भूमिका जो इन शहरों की रही है, चाहे वो छोटा भी शहर रहा हो, that need to be brought forward to understand the region and the region's composition and all that. That will help us to understand the social processes that was at work in the colonial time and even afterwards. So thank you very much. आप अपने comments दीजिए, suggestions दीजिए, और अगर questions हैं कुछ तो I am willing to answer. थैंक यू सर. आपने जैसे स्मॉल टाउन के रोल पर बात करते हुए एजुकेशन, बोटेनिकल और राम राय और पंजाब का कुछ रिलेशन भी बताते हुए एक हमें ज्ञान दिया. और अब साथियों को बेनती करता हूं मैं कि आपके अगर क्वेश्चन है तो सर से माइक ऑन कर भी पूछ सकते हैं और टाइप भी कर सकते हो. सर पहले मेरा भी एक क्वेश्चन है सर. हाँ बताइए. जैसे मैं अबोहर में एजुकेशन को देख रहा था, तो यहाँ स्टार्टिंग में 20वीं सदी में तो संतों का काफी रोल रहा है, जैसे केशवानंद जी, आत्मानंद जी और वशिष्ठ मुनि जी, ये सभी स्कूल खोल रहे हैं. जब आप देहरादून पर केस स्टडी कर रहे थे तो वहाँ भी कुछ ऐसा देखा कि किन्होंने स्कूल खोले? वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, वहाँ पे पिक्चर थोड़ा डिफरेंट है. सिर्फ आर्य समाज में तो बहुत सारे संत वंत जुड़े हुए थे, मैं ये नहीं कहूँगा. आर्य समाज प्लेज एक्टिव रोल इन वन वे, लेकिन जो और स्कूल थे वो मिशनरीज के थे या इस तरह के लोगों के थे जो यूरोपियन के थे या इंडियन एलिट भी बन गए. देयर फोकस वाज ऑन मोर वो इंग्लिश टाइप की एजुकेशन, और फिर वो इंग्लैंड में कोई अपना मेट्रिकुलेशन का एग्जाम दे करके दे विल गेट द सर्टिफिकेट. उस तरह के स्कूल ज़्यादा थे. ये स्कूल आए बाद में थोड़ा सा आए, बट मुझे लगता है कि आर्य समाज का अपार्ट इनके अलावा जो ये लोग ब्रिटिश और यूरोपियन और ये लोग थे जो डोमिनेंट थे उस शिक्षा में, क्योंकि इस पे मसूरी के बोर्डिंग स्कूल का बहुत ज़्यादा प्रभाव था और वो स्कूल भी उसी एंगल से बनाए जाते थे. लेकिन आर्य समाज ने उसको बदला काफ़ी, और आर्य समाज के अपने स्कूल थे, कन्या पाठशालाएँ थी और बड़े स्कूल भी उन्होंने खोले, जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया. और मेट्रिकुलेशन उसके बाद के वो ज़्यादा बड़े सेंटर के रूप में इमर्ज हुए, क्योंकि इनके जो प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल थे उसके बाद वो बड़ी एजुकेशन या हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड जाएंगे या कहीं बड़े शहर में जाएंगे जहाँ पे वो उस एजुकेशन को लेंगे. तो आई थिंक थोड़ा सा अंतर है इसमें उतने संतों का इतना ज़्यादा रोल नहीं है. तो म्यूनसिपैलिटी स्कूल हैं, ये तो आर्य समाज के स्कूल्स हैं, और ये तो इस तरह के मिशनरीज के स्कूल हैं या और लोगों जिन्होंने वो स्कूल खोले हैं उस टाइप से. सुखवीर, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा. हाँ. अच्छा धीरेन्द्र, एक छोटा सा सवाल है मेरा. ये जनरली मैंने एक्सपीरियंस किया था जब 2 साल मैंने शिमला में गुजारे थे, और एक बहुत डिफरेंट तरह का, क्योंकि हम लोग वहाँ पर उस प्लेस में रहते थे जो इंपीरियल सेंटर था. आप जानते ही हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला. आई थिंक वसुधा जी भी वाज देयर एट इंस्टीट्यूट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. तो वहाँ पर जब हम बाहर, एक तो थी एक दुनिया थी जो उस इंस्टीट्यूट के अंदर की थी, और एक दुनिया थी जो इंस्टीट्यूट के बाहर की थी. ऐसे कई ओकेजन्स थे, चाहे वो हम अपने रिहायशी इलाकों में देखें, चाहे वो अपने इंस्टीट्यूट के बाहर के शिमला में देखें, जिसमें कभी कभी ऐसा लगता था कि देयर सीम्स टू बी अ एंटी माइग्रेंट सेंटिमेंट इन द लोकल पॉपुलेशन. मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि देहरादून माइग्रेंट एटीट्यूड अमंग द लोकल पॉपुलेशन. यस, अमंग द लोकल पॉपुलेशन.
तो जब देहरादून बस रहा था, क्योंकि हम शिमला का तो जानते हैं बड़ा लंबा इतिहास है, आसपास के इलाकों से बेगारी करा के शिमला शहर को बसाना है ना, उसका एक लंबा इतिहास है कि शहर बसता कैसे है ना, वो भी एक खास तरह की क्या कहते हैं उसको, फोर्स लेबर या बेगारी, अनपेड लेबर के जरिए भी बनता है। बट देहरादून के कॉन्टेक्स्ट में क्या हमें इस तरह की डिस्कशन मिलती हैं कि जब शहर बस रहा है तो उसके बसने के डायनामिक्स क्या हैं, और जो वहाँ के लोकल पॉपुलेशन है, चाहे वो सराउंडिंग एरियाज की क्यों ना, तो उनके शहर के साथ क्या रिलेशनशिप जो है कायम होता है? एक मिनट धीरेन्द्र, मैं मतलब इससे जुड़ा हुआ ही है इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। आपने मतलब एलीट माइग्रेशन की बात की है कि जो, पर देहरादून में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे दूसरे तरह के ग्रुप्स भी हैं, जैसे मतलब सिर्फ नेपाली रॉयल्स ही नहीं है, काफी सारे नेपाली जो कम्युनिटीज हैं वो आसपास में रह रही हैं, तिब्बती हैं जैसे फॉर इंस्टेंस जो बसे। उसके अलावा जैसे आसपास के जो पर्टिकुलरली 2 इम्पोर्टेंट शहर तराई के जो थे, अंबाला और सहारनपुर, इनसे ट्रेडिंग रिलेशनशिप्स जो है वो बहुत क्लोज थी। तो यहाँ से बसने वाले बहुत सारे ट्रेडिंग कम्युनिटीज भी जो हैं वो देहरादून में बसे। तो ये जो नॉन एलिट इंडियन जो मतलब कम्युनिटीज थी, नॉन पहाड़ी, है ना, वो बसती गई वहां पे, क्योंकि गढ़वाली जो है वो शहर के अंदर काफी देर से बसना शुरू होते हैं। तो जो नॉन गढ़वाली जो कम्युनिटीज थी, इनके सोशल टेंशन्स क्या थे उस पीरियड में? हाँ, मैं योगेश का आंसर दे देता हूँ। इसका जो नेचर ही शहर का जो पहले से था, जैसे मैंने आपको बताया कि लोकल डेफिनेशन वाज बिट कॉम्प्लिकेटेड। सारे लोग इधर उधर से ही आ रहे थे, इवन दोज हु एग्रीकल्चर के लिए भी इनिशियली आए, कुछ लोग लोकल थे, कुछ इधर उधर से आ रहे थे। उस टाइप का लोकल सेंटिमेंट देखने, मैंने तो इस लेक्चर में कुछ फोकस ही कुछ और रखा है। जो मेरा रियल वो क्या, उसमें मैं देख रहा हूँ कि शहर की आइडेंटिटी समय के साथ बदलती जा रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा बदल जाती है, विद इन ए फ्यू इयर्स इसका शहर का वो बदल जाता है। तो इसमें कोई फिक्स वो नहीं है। आप आज के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बहुत डिफरेंट है। मैं तो आज पे तो आ ही नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट कमिंग टू दैट, बिकॉज आई एम डीलिंग विद द पीरियड विच इज अर्ली 20th सेंचुरी और लेट 19th और ज्यादा से ज्यादा 1930-40 तक का मैं पिक्चर कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद शहर बहुत तेजी से बदलता है। पार्टीशन के बाद बहुत ज्यादा बदल जाता है। तो वो उस टाइप का लोकल एलिमेंट यहाँ पे नहीं था, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बताया, छोटे शहर की एक खूबसूरती होती है कि या जो भी है वो हिंटरलैंड के लोग वहाँ पे ज़्यादा आते हैं। वो देहरादून पे एप्लीकेबल नहीं था। जैसे तनुजा जो हिल पीपल की बात कर रही है, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू मूविंग टू देहरादून फॉर वेरी रिसेंटली व्हेन दे थॉट कि एजुकेशन से कुछ एडवांटेज हो सकता है। और जो लोग आ रहे थे वो डिफरेंट लोकेशन से आ रहे थे और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो कोई अपने को, बिकॉज मैं वहाँ की लीडरशिप को भी देखता हूँ, पॉलिटिकल लीडरशिप, म्यूनसिपैलिटी लीडरशिप, आई गॉट वेरी वेरी सरप्राइज दैट 2 लोग एक जगह के नहीं मिलते। कोई कहीं से आ रहा है, जो मैंने स्कूल बताया आपको डीएवी का, उसके प्रिंसिपल थे एक लक्ष्मण प्रसाद, हु बिकेम ए वेरी पॉपुलर एंड वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन, वो म्यूनसिपैलिटी के मेंबर भी, चेयरमैन भी शायद एक बार रहे। ही वाज फ्रॉम आगरा, ही टुक हिज एजुकेशन फ्रॉम आगरा। वो केमिस्ट्री के टीचर थे, उन्होंने अमृतसर में पढ़ाया काफ़ी साल तक। व्हेन द डीएवी स्कूल वे लुकिंग फॉर कि किसी अच्छा बंदा चाहिए हमें, क्योंकि उन्होंने कई प्रिंसिपल रखे, दे वे फेल टू अट्रैक्ट स्टूडेंट और अच्छा कर पा रहे थे, तो वो लक्ष्मण प्रसाद को लाए, जो वहाँ आकर के इतने इम्पोर्टेंट फिगर बन गए कि इवन द ब्रिटिश रिकॉग्नाइज हिम एज ए वेरी इंपॉर्टेंट। और स्कूल से रिलेटेड जितनी भी कमेटियाँ यूपी की बनती थी, लक्ष्मण प्रसाद जो भी उनका नाम, वो ही वाज अ पार्ट ऑफ दिस। व्हाट आई एम सेइंग दैट पीपल आर कमिंग फ्रॉम, उस पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं, आज की बात नहीं कर रहा हूँ कि आज लोकल क्या है, वो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इवन आफ्टर पार्टीशन लॉट ऑफ शिफ्ट हैपन, मुस्लिम वापस चले जाते हैं और बहुत सारे और लोग आ जाते हैं, सिंधी जाते हैं, पंजाब से लोग आते हैं, सब्सटेंशियल पॉपुलेशन कम्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट, क्योंकि देहरादून छोटा शहर था और क्विकली इसके बदल सकता था, और वो बदले इसके सिनेरियो बहुत सारे टाइम में। अब बहुत सारे लोग पहाड़ से रहते हैं जिनकी पॉपुलेशन काफ़ी सिग्निफिकेंट हो गई है, जो कि पहले नहीं थी। तो वो उसमें लोकल का एलिमेंट वक्त के साथ बदलता रहा। और लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी तक यूरोपियन हैड डोमिनेट इन कल्चरल डोमेन, दो नेटिव टाउन वाज स्मॉल बट डिडंट हैव मच से। बट उसको भी मैं अपने वर्क में देखता हूँ कि वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है बाद में, और बेसिकली विद कमिंग ऑफ दिस एजुकेटेड क्लास, और फिर ये असर्ट कर रहे हैं अपने आप को, और इनके कल्चरल चीज़ें हो रही हैं ये एजुकेशन के थ्रू। दीज पीपल आर ट्राइंग टू वर्क अदर से कि आप शहर को अपने उसमें ला रहे हैं, कि otherwise it's a totally European dominated in cultural terms, not in the terms of population,
but in terms of space on which they had a control, or in terms of the cultural which was a dominant culture, क्योंकि यूरोपियन सडनली गर्मी में बहुत ज़्यादा हो जाते थे, जो मसूरी जा रहे हैं ओवरनाइट यहाँ पे रुकेंगे, और मसूरी और देहरादून उनके लिए एक सेम चीज़ है जिसको कि आकर के वो अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करेंगे। जो तनुजा बोल रही हैं वो यस आई एम एग्री, देवर फॉर एग्जाम्पल सहारनपुर और बहुत सारे एरिया से जो मुस्लिम कम्युनिटी आई थी which were वुड वर्कर्स और टिम्बर का बिजनेस करते थे, वो उस तरह की कम्युनिटीज़ थी, बहुत सारी मिक्स कम्युनिटी थी। एलिट तो मैंने, क्योंकि मेरा फोकस इस पे एजुकेटेड क्लास पे था, इसलिए मैं एलिट की बात कर रहा हूँ। और मैं ये बात कर रहा हूँ कि मिडिल क्लास की फाउंडेशन कैसे इसमें वो हो रही है, इस्टेब्लिश हो रही है, उसको आप एलिट भी कह सकते हैं। एक लिमिट के बाद वो एलिट हैं, अगर वो रूलिंग क्लास और प्रिंसिपली क्लास के आ रहे हैं, और लोग अगर आ रहे हैं जो एजुकेशन से एडवांटेज लेके बड़े बड़े लॉयर बन रहे हैं या और अपना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करें, बिकॉज मसूरी एंड देहरादून बिकेम ए बिग सेंटर फॉर यूरोपियन बिजनेसमैन। बड़ी बड़ी शॉप खोलते थे और बड़ी बड़ी बिजनेस करते थे, और इंडियन आल्सो हैड अ बिग रोल इन दिस। दे हैड अ बिग होटल्स, they have a big restaurant, they had other kind of business which these tourists who have a paying capacity that can thrive in this kind of situation. All sort of people came. That I agree, which I am not exploring in this particular paper, because focus was on education, elite or middle class, so on and so forth. And yeah, anyway. संदीप मिश्रा और वसुधा पांडे, इनकी भी क्वेश्चन है। Yes. Oh, hello sir, thank you for Yes. like very insightful lecture. So sir, my question is कि जो स्मॉल टाउन में महिलाओं की शिक्षा का ना बढ़ने का कारण क्या था? मतलब आप थोड़ा इसमें बताएंगे कि कोई का मतलब जिसमें महिलाओं को शिक्षा इतनी नहीं बढ़ी जितनी, मतलब पुरुषों की भी उतनी नहीं थी, बट बेसिकली महिलाओं की शिक्षा का भाई उसका तो सोशियो कल्चरल रीजन है, पर देहरादून के केस में तो मतलब ऑब्वियसली बहुत लोगों ने एजुकेशन नहीं ली होगी उस तादाद में। पर जैसे मैंने आपको बताया कि मिशनरीज ने, अमेरिकन मिशनरीज ने गर्ल्स कॉलेज 1854 या कुछ में खोल दिया था, बहुत जल्दी खोल दिया था। और उसके बाद भी जो भी ये जीसस एंड मैरी और अदर स्कूल थे, उनकी भी ब्रांच थी जिसमें कि गर्ल्स पढ़ती थी, और ऑब्वियसली मिडिल क्लास वाले भी इंडियन के खुद भेजते होंगे उसमें बच्चों को, तो वो नहीं था। लेकिन अब सोशल इनहिबिशन जो रहा था, वो कल्चरल जो लिमिटेशन थी वो तो थी, तो लागू। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप एस्पायरिंग पेरेंट्स आर सेंडिंग देयर चिल्ड्रन फॉर हायर एजुकेशन, मेट्रिकुलेशन के लिए आप सपोज आगरा भेज रहे हो या मेरठ भेज रहे हो या दूर भेज रहे हो या आप अम्बाला भेज रहे हो बच्चे को, तो पीपल विल बी मोर केयरफुल और मोर conservative in sending girls rather than boys. So those were the cultural factor which remain there for quite some time. इसीलिए अगर नियर बाय है स्कूल तो गर्ल्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता था उस सिचुएशन। या वसुधा जी का क्वेश्चन होगा उसको। हाँ, ओके। मैं पूछना चाहती थी धीरेन्द्र कि इसको मैं तो अपने उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में देख रही थी जी। तो इसमें कई सारी बहुत दिलचस्प चीजें आ रही हैं, जैसे कि अल्मोड़ा शहर जो है जी, वो तो पहले से बसा हुआ है। हाँ जी, तो जी। उसकी एक किस्म की कुमाऊनी आइडेंटिटी और वो सब है, उसमें पहाड़ीपन बहुत मतलब रचा बसा हुआ है जी। लेकिन दूसरी ओर है जो नए शहर बन रहे हैं और जो नए छोटे शहर बन रहे हैं, जिसमें कि मैं हल्द्वानी, कोटद्वार इस तरह के शहरों को जोड़ूंगी जो कि पहाड़ से लिंक है लेकिन नए आ रहे हैं क्योंकि कॉलोनियल कॉमर्स दूसरी किस्म की हो रही है। तो वो जो है जैसे हल्द्वानी है, अब मैं तो हल्द्वानी की रहने वाली भी हूँ, वहाँ मेरे दादाजी वगैरह भी रहे थे, वो टिम्बर मर्चेंट्स थे। तो इस तरह के देहरादून का क्या है, क्योंकि मुझे आई एग्री विद यू कि देहरादून का एक स्पेसिफिक पहाड़ीनेस नहीं है और हल्द्वानी में भी नहीं थी। हल्द्वानी में भी बहुत सारे लाला लोग थे और सारे अड़तिया जो थे वो सब बाहर के थे, पर बहुत सारे पहाड़ी लोग भी थे, माउनी ज्यादा थे। पर इसमें जो है एक दो सवाल हैं इसमें। एक तो ये है कि 19th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी में क्या देहरादून में लोग साल भर रहते थे, क्योंकि हल्द्वानी में रहना मुश्किल होता था। मुझे याद है हम 1960s तक हम लोग हल्द्वानी जाते थे 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। हम लोग थ्रू आउट द ईयर नहीं रहते थे। एक ट्रांस ह्यूमान्स का एक माइग्रेशन होता था और ये 1960 के बाद ये बंद हुआ है। तो मुझे लगता है जो आप कह रहे थे ये स्वम्पीनेस और देहरादून वैली, मलेरिया, ये सब भी था। और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो क्योंकि देहरादून इलीट ज्यादा रहा, हल्द्वानी इलीट नहीं रहा, क्योंकि वहाँ बगीचे थे।
हमारे पहचान के लोग जो हैं उनके पास बासमती के, लीची के बगीचे थे। तो ये कब बने? और ये जो एक काइंड ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ जी, ये कब हुआ? क्योंकि क्या 19वीं शताब्दी के अंत में भी लोग थ्रू आउट द ईयर वहाँ रहते थे? हल्द्वानी वगैरह में तो लोग नहीं रह सकते थे क्योंकि मलेरिया था इत्यादि, और पहाड़ी तो कतई नहीं रहता था, वो रहना भी नहीं चाहता था। और बहुत सारे फोक सॉन्ग्स भी हैं उसके बारे में कि, और आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है, झन दिया बाजू बिलोरी में लगला, वहाँ घाम लगते हैं करके जी। और देहरादून का भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन देहरादून दून होने के कारण थोड़ा फर्क भी है। तो इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि आपको हल्द्वानी से इसको कैसे कंपेयर करेंगे? दैट मे बी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू लुक एट इन टर्म्स ऑफ एन एनवायरमेंटल आल्सो पर्सपेक्टिव। जी, ये है सवाल जी। मुझे ये इसमें ये लगता है कि जो इन्होंने प्लांटर्स जो आए, जिनके पास रिसोर्सेज थे और ब्रिटिश सपोर्ट के, मैंने तो ज़्यादा डिटेल नहीं किया, वो मेरी बुक में भी है और इसमें भी मैं नई बुक अगर आएगी तो उसमें बताऊंगा। उन्होंने कम्प्लीटली इकोलॉजिकली उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था, उसको ड्राई बना दिया, वेजिटेशन को काफ़ी इलाकों में ख़त्म कर दिया। वर्चुअली दे कट इट और प्लांटेड टी, जो कि सक्सेस नहीं हुआ ज़्यादा। उससे मुझे लगता है कि वो मलेरिया वाला ऐसा नहीं हुआ होगा, ख़त्म हुआ होगा, लेकिन काफ़ी कम उसका खतरा जो वो फिर बाई 1860-70 जो मैं कह रहा हूँ पेंशनर जा रहे हैं वहाँ, तब तक वो खतरा ख़त्म हो गया है। और वहाँ वो लोग साल भर रह रहे हैं, न केवल प्लांटर साल भर रह रहे हैं, ये पेंशनर पर्टिकुलरली जो कर 1890s से लेके 1910 और 10 तक बहुत ज़्यादा नंबर में लोग आ रहे हैं, जो इंडियन पेंशनर भी आ रहे हैं, जो शायद मिडिल लेवल पे जो भी काम कर रहे होंगे, उनका रेफरेंस लगातार मिल रहा है। इवन गजेटियर लिखता है और तो रिकॉर्ड्स बताते ही हैं। तो दे आर कमिंग अप परमानेंटली सेटलिंग। इनफैक्ट वॉल्टन सेज कि देयर वाज अ प्रॉपर्टी बूम, वो 1910 में लिख रहा है, इन द दून वैली। वो कैसे बूम हो रहा है कि देहरादून वाज नोन फॉर ए लार्ज बैंगलोर, एक बंगला होगा, उसके चारों ओर कंपाउंड होगा जिसमें आपके फल के पेड़ हैं, ये पेड़ हैं। अब इतनी डिमांड हो रही है हाउसिंग की, बिकॉज पीपल वांट टू कम देयर, वो उसको तोड़ रहे हैं और उसको बिल्डर आ रहे हैं तो उसको रीसेल कर रहे हैं। तो उसमें लगातार वो साल भर रह रहे थे, देयर इज नो डाउट कि वो साल भर रह रहे थे। बट इसी से जैसे तनुजा का क्वेश्चन है, ये वो आइडेंटिटी वाला, इसमें बड़े मिक्स लोग आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं। देयर मांडा का हाउस है, इसका हाउस है, उसका हाउस है। कुछ लोग टेम्पोररी आ रहे हैं अनडाउटेडली, जो कि बाहर से आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग वहाँ परमानेंटली रह रहे हैं। ऐसा मेरा एक सवाल इसी से जुड़ा है कि सड़क कब जा रही है? क्योंकि सड़क के बिना सड़क बहुत पहले चली गई। सड़क जो थी ये ट्रेन और 1820 और 30 में इन्होंने हरिद्वार से वहाँ पे टनल बना करके, जो अब रेलवे टनल भी है, उसको दून वैली में एंट्री के लिए किया। अदरवाइज पहले सहारनपुर के थ्रू आते थे। और ट्रेन भी बहुत पहले गई, ट्रेन 1901 में आई। हाँ, लेकिन सड़क उससे पहले इन्होंने पूरा वहाँ से कनेक्ट करते हुए, सहारनपुर से कनेक्ट करते हुए, जो अब ये क्या है हिमाचल के बॉर्डर है, वहाँ तक इन्होंने रोड बना दी थी, जो कि 20 साल तक बार बार बह जाती थी बरसात में। बट देन दे मेड इट गुड स्ट्रक्चर व्हिच रिमेन अ परमानेंट फॉर लॉन्ग टाइम। सो दैट ओपन्ड अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस वैली। बट वो क्वेश्चन जो मेरा है, वो एक लोकल आइडेंटिटी इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इन दिस। दो और लोग आ रहे हैं, लेकिन डिफरेंट लोकेशन से आ रहे हैं। मुझे बहुत डाइवर्स लोगों का ग्रुप लगता है, पर्टिकुलरली जो पीपल आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, विच आर प्लेइंग रोल इन पॉलिटिक्स, म्युनिसिपैलिटी, एजुकेशन एंड सो ऑन। दोज पीपल आर कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट्स, गुड नंबर फ्रॉम बिजनौर, a good number from Agra, a good number from Punjab, a good number from Ambala and other places. Saharanpur, of course, from certain set of people are coming, and some people from पहाड़ों से भी, मसूरी में पहाड़ों से टेम्पोररी लोग आ रहे हैं, जो समर में वहाँ आके छोटे मोटे काम करते हैं अंग्रेजों के लिए, then they go back to their villages and all that. That is a temporary kind of thing. I don't know how many, because I haven't seen that reference for Dehradun, जो मसूरी के लिए है, वहाँ पे टेम्पोररी आ रहे हैं। कुछ शायद देहरादून में भी आ रहे होंगे और वापस जा रहे हैं, लेकिन a good number of population is now there permanent by the end of the 19th century. Thank you. Thank you. So one question. सर, जो मुझे थोड़ा ये भी समझ आ रहा है कि मे बी नहीं, आई फील आर्य समाज हैज प्लेड अ रोल इन चैलेंजिंग द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ऐसा भी है? इट हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल।
क्वेश्चन पूरा हो गया आपका? यस सर। हाँ, पार्शियली हम कह सकते हैं। देखिए 2-3 तरह के स्कूल होते थे उस पीरियड में, ठीक है। कुछ स्कूल ऐसे होते थे जो म्युनिसिपैलिटी के स्कूल हैं, वो एक्सपेक्टेशन यही थी कि वो प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद दे विल नॉट गो फर्दर, ठीक है। और जो ये ब्रिटिश और यूरोपियन वाले स्कूल थे, वो लोग प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे तो तैयार करते थे मसूरी और देहरादून में, लेकिन वो एग्जाम जो थे वहाँ के बोर्ड का देते थे, इंग्लैंड का देंगे, कैम्ब्रिज का, या कुछ कुछ वो पास वाला एग्जाम देंगे। तो ऑब्वियसली देयर लाइन इज वेरी वेरी डिफरेंट। लेकिन जो आर्य समाज रिलेटेड स्कूल है, they are not as low in resources and low in quality as the municipality school were. These have a good quality. They ensure that there will be high quality of education, and they used to give the state के जो board होते थे, जैसे उसमें यूनाइटेड प्रोविंस होगा अगर वहाँ पे देहरादून में, तो दे विल गिव द एग्जाम ऑफ बोर्ड का, जो यूपी बोर्ड का एग्जाम है। तो ऑब्वियसली आई एग्री विद यू पार्शियली दैट दे आर इन ए वे इंडियनाइजिंग एजुकेशन, which I have seen, which looks so डिफरेंट नाउ, इज दैट बहुत सारे लोग, जैसे मैं एपी मिशन स्कूल की बात कर रहा हूँ, जो प्रेबिस्टियंस चर्च वालों के स्कूल थे देहरादून में, मेनी पीपल वे हेजिटेंट इन सेंडिंग देयर चिल्ड्रन देयर, कि वो कन्वर्ट कर देंगे, या जो हॉस्टल में रहते थे, कई बार मैंने न्यूज़पेपर में देखा जो कि र्यूमर टाइप की होती थी कई बार, कि वहाँ पे जी वो बच्चों को बीफ खिला देंगे। तो ऑब्वियसली दे वेर रिलेक्टेंस इन सम पीपल, नॉट ऑल, नहीं तो वो स्कूल कैसे चलतेगा, सब में होती, लेकिन बहुत लोग जो बहुत कंजर्वेटिव होगा और डरेगा उसमें। लेकिन आर्य समाज के स्कूलों में वो कुछ नहीं था, एंड दे वे डोमिनेंट इन पॉलिटिक्स, दे वे डोमिनेंट इन म्युनिसिपैलिटी were very foundation for Indian politics. One need to understand that these were the people, these were the places from where the leaders emerged, and then they acquired larger life size and then became provincial leader or इस टाइप के लीडर। सो वहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो आर्य समाज इज अ वेरी वेरी डोमिनेंट इन देहरादून। वहाँ के जो इनिशियल हैं, और महादेवी कन्या पाठशाला वहाँ पे जो बहुत प्रोमिनेंट गर्ल्स कॉलेज, जब ज्योति प्रकाश जिन्होंने डीएवी कॉलेज का मेन फाउंडिंग किया था देहरादून में, उनकी वाइफ थी महादेवी, और महादेवी ने बहुत शुरू में वहाँ पे 1901 में लड़कियों का स्कूल शुरू किया अपने घर में ही पहले। और जब वो बढ़ना शुरू हो गया तो ज्योति प्रसाद ने अपनी बहुत सारी लैंड, बिकॉज ही वाज अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर इन देहरादून, एंड ही केम फ्रॉम मेरठ, एंड he came, his relative was in FRI। जैसे मैंने कहा ये इंपीरियल इंस्टीट्यूशन की लिंक है। वो एक बार उनसे मिलने आए तो उनको देहरादून पसंद आ गया। उनके रिलेटिव ने कहा कि आप देहरादून में ही क्यों नहीं लॉ की प्रैक्टिस कर देते हो। ही एग्रीड और ही बिकेम ए बिग लॉयर, एंड देन ही amassed लॉट ऑफ वेल्थ, जिससे फिर उसने न केवल डीएवी के उसमें हेल्प किया, बट हिज वाइफ ओपन दिस स्कूल। और जो वहाँ पे एक प्रोमिनेंट गर्ल्स कॉलेज है, अब तो कॉलेज हो गया है, डिग्री कॉलेज, बिकेम डिग्री कॉलेज इन 1957. He gave the large land for that, and for some years he gave 10,000 per month for that school. Though Mahadevi died in 1920, that's why the school was named after that. जैसे एक का पहले नाम भी क्वेश्चन भी था गर्ल्स एजुकेशन पे, the Arya Samaj was insisting on girls education as well at that point of time, and they were opening schools and all that. So this Mahadevi Kanya Pathshala, which then now is MKP College in Dehradun, is one of the prominent college of women college at that point of time in the province itself, and got a lot of attention that this was a very successful school and the college. So I can say, well, वो obviously वो boarding school के culture से आर्य समाज का different model था, लेकिन वो इंग्लिश तो पढ़ाते थे। इस वाले में हरिद्वार वाले गुरुकुल कांगड़ी में इंग्लिश नहीं होती थी, वो संस्कृत पे आधारित था। लेकिन जो आर्य समाज के ये वाले एंग्लो वैदिक वाले कॉलेज थे उसमें इंग्लिश भी होती थी, और इंडियन सिस्टम के थ्रू जो भी वो करते होंगे। और तो जनरली द सिलेबस और बुक्स तो बोर्ड इत्यादि डिसाइड करता था व्हाट इज टू बी टॉट एंड ऑल दैट, but Arya Samaj played a crucial role, at least in that town, which I studied that town in very detail, and I see that their role is so important and significant. And this DAV college, which I told you, was a college, high school ही था, उसको कॉलेज ही कहते हैं उसमें, फिर 10+2 हो गया, which attracted all the western UP, Haryana, which इससे लगा हुआ है, sometimes the student from Punjab, and large number of hill students who will come there for higher education, matriculation, which was a very important degree at that point of time. So in that way, of course, this DAV schools were parallel to
the English boarding schools. They created a different culture and different context. And this Lakshman Prasad, which I refer to you, the principal of this school, जो भी nationalist वहाँ पे आएगा, देहरादून में आएगा, और मसूरी जा रहा है, जहाँ जाएगा, he always invited them. Gandhi came multiple time, Malviya came multiple time, Lala Lajpat Rai came multiple time, or several other people came and who spoke to the student there. He took risk. Government sometimes were not happy with the way he did it, but he took that kind of risk. And this college was on forefront in 1942 agitation, and many students and teachers were arrested in the 1942 agitation. So obviously their education pattern was slightly different than what I was referring to you, the English medium schools, but they were schools. One has to keep in mind that they were children and the boarding school system. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. तनुजा जी का एक और सवाल टैग किया, बताइए. When did higher education institution come up? When did higher education institution come up from? But Tanuja, no people continued to go to Agra and Meerut for a very long time. हाँ, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ. मैट्रिकुलेशन था, मुझे अभी मैं डेट के लिए मुझे पेपर देखना पड़ेगा. It became by 1912 or 14 हाई स्कूल बन गया ये. उसके बाद ये 25, 27 या कभी ये इंटरमीडिएट बन गया 10+2. But if you have to take education beyond that, then you have to go Banaras, you have to go Allahabad. Allahabad particularly until other institution came 1920s में आते हैं सारे, और nationalist institution जो universities खुलती हैं. Agra University comes later and then people go there. So higher education के लिए again देहरादून, अगर हम इसको भी देखते हैं, क्या नाम है, रस्किन बॉन्ड को देखते हैं. रस्किन बॉन्ड मैंने इसमें डिस्कस ही नहीं किया है. His whole reflection on the town, and he say that ये स्कूल तो पढ़ा सकता है, उसके बाद कुछ नहीं है. देहरादून से they have to run away for somewhere. So for higher education one has to go elsewhere. DAV becomes a degree college I think in 1940s or so. But till that time people will go. 1920s onward people were constantly moving after matriculation or +2 education to the higher education. Banaras and Allahabad were the two centers where people go in large numbers. So was the Agra. And Lahore also sometime attracted people who went there. But I don't know culturally or why the Banaras was first preference. Because I see many journalists who came, or other lawyers and other, they took education in Banaras, which I have the references of their taking education in Banaras. Some of them in Sanskrit, some of them in Hindi and English and so on. Sukhir, I have a question. Yes. धीरेन्द्र, एक छोटा सा सवाल है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर जैसे हम मेडिवल कस्बों की बात करते हैं, तो मेडिवल कस्बों के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्टिव कल्चरल आइडेंटिटी भी जुड़ी होती है. तो जब मॉडर्न स्मॉल टाउन्स की बात करते हैं, क्या मॉडर्न स्मॉल टाउन, बिकॉज देहरादून की अदरवाइज प्री मॉडर्न यानी प्री कॉलोनियल हिस्ट्री नहीं है ना, तो ऐसे टाउन्स क्या अपनी एक डिस्टिंक्टिव कल्चरल आइडेंटिटी भी एस्टैब्लिश कर पाते हैं? देखिए योगेश, मैं तो इसका बिल्कुल एग्री हूँ आपसे. सहारनपुर का मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेरठ का मैंने उतना डिफरेंसेस नहीं देखे हैं प्रीवियस के, लेकिन कुछ शहर, आगरा देखो, आगरा तो लगातार, खैर आगरा तो बहुत इंपीरियल कैपिटल ही था उसके अलावा, लेकिन बहुत सारे शहर वो प्री कॉलोनियल पीरियड से लगातार, सूरत को देख लीजिए आप, सूरत तो खैर छोटा नहीं था किसी भी समय में, लेकिन और बहुत से शहर डेफिनेटली होंगे जिनके प्री कॉलोनियल रूट्स थे. और जैसे बसुधा मैम ने बहुत सारे शहर बताए जो हिल्स के भी छोटे छोटे शहर हैं, बहुत ही छोटे हैं तो, लेकिन दे वे ट्रेड सेंटर, वो व्यापार हो रहा है वहाँ से, दे में रिमेन. इसलिए अगर आप पूरे मेरे लेक्चर में देखें, मैं एजुकेशन वाले पे ज़्यादा फोकस कर रहा था. आई एम नॉट रिफरिंग टू द हापुड़ को आप ले लीजिए. हापुड़ आज भी अगर आप देखते हैं, मेरठ के पास हापुड़ है, इट्स ए वेरी बिग एग्रीकल्चर मंडी, एंड दिस इज अ वेरी बिग एग्रीकल्चर मंडी इन द प्री कॉलोनियल पीरियड एज वेल. दैट रिटेन दैट, लेकिन वो कभी एजुकेशन सेंटर नहीं बन पाया. मेरे ख्याल से अगर एजुकेशन के लिए वो उस इलाके के जाना होगा तो मेरठ ही रहा होगा, क्योंकि डीएवी कॉलेज विच केम टू देहरादून लेटर ऑन वाज इनिशियली इन मेरठ. अब मेरठ का मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा. मेरठ ऑल्सो हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री. 1857 में इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल है, मस्ट हैव ए मच लॉन्गर हिस्ट्री बिफोर दैट. बट ये हापुड़ का मैं बता रहा हूँ, सहारनपुर का मैं बता रहा हूँ.
और ऐसे बहुत से टाउन और सिटीज है जिनका रेफरेंसेस हम उसमें पाते हैं, और देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स. मैं अभी नाम भूल गया हूँ, मुझे तैयारी का मौका नहीं मिला बिकॉज ऑफ वेरियस बिजीनेस. इन मिडिवल टाउन्स पे किताबें हैं, याद ही नहीं आ रहा मुझे अभी उनका नाम. ब्यूटीफुल, सी रिफर्स मेनी ऑफ दोज टाउन विच आर स्टिल देयर, जो सेंटर ऑफ किसी पर्टिकुलर क्राफ्ट के थे. सी रिफर टू सहारनपुर एज वेल, क्योंकि सहारनपुर देहरादून की नज़दीक है तो मुझे उसकी याद है. बट शी गिव्स ए लिस्ट ऑफ द टाउन्स which were very important in Mughal time in terms of trade, in terms of certain kind of handicraft, in certain kind of products, or those have a long history and must have a longer tradition कि वो क्यों बना, कैसे बना, क्या व्यापार के लिए बना या कोई और चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट थी. हर टाउन का एक अपना रोल है. They fulfill different kind of role in different point of time. So one need to understand that what role they were playing. For example, सहारनपुर जो है वो तब भी रोल वही प्ले कर रहा था. वहाँ काश्तकारी जो है वो that was strong in medieval, maybe in late medieval, and continued to be a very very important town on that field, but did not emerge as an education center. Nobody, I have not heard कि कोई सहारनपुर पढ़ने जा रहा है और वहाँ से पढ़ के वो फिर और higher. Obviously there must be municipal schools. Obviously, there must be some local school. Maybe the Arya Samaj school are there. I'm talking about that point of time. अब तो सभी जगह higher education भी है, but could not attract students from different regions, other regions. लाहौर का अगर आप एग्जाम्पल देते हैं अपने सराउंडिंग में, तो थोड़ी एजुकेशन के बाद लोग लाहौर चले जाते होंगे. एजुकेशन के सेंटर वेयर वेरी अट्रैक्टिव. इलाहाबाद के इमर्ज होने के बाद तो बड़ी संख्या में लोगों की एस्पिरेशन है कि इलाहाबाद में पढ़ें. ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में ऐसे वन कैन लोकेट. ये तो दिल्ली विल्ली तो बहुत बाद में इमर्ज हो रहे हैं एजुकेशन के इतने प्रोमिनेंट सेंटर. अदरवाइज द इलाहाबाद वाज देयर. पीपल से पटना यूनिवर्सिटी जब भी खुली होगी तो पटना वाज देयर, और दे वर लोकल प्लेसेस वेयर पीपल आइडेंटिफाइड ए सेंटर वेयर वन हैज टू गो फॉर हायर एजुकेशन. एंड देन वन हैज टू सी दैट लिंकेज विद द ओल्ड, कि क्या उससे इमर्ज हो रहा है, क्या डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इमर्ज हो रहा है, क्यों उसके लिए एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है. इसका मतलब ये नहीं है कि इलाहाबाद ट्रेड और बिजनेस का सेंटर नहीं, तो बहुत क्रूशियल सेंटर था. पूरी किताब है क्रिस बेली की इलाहाबाद पे, जो वहाँ की पॉलिटिक्स तो इतनी क्रूशियल थी, इतने इंपॉर्टेंट लीडर वहाँ से इमर्ज हुए. मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, टंडन एंड ऑल दैट पीपल फॉट देयर. सो इम्पोर्टेंट क्रूशियल पॉलिटिक्स वर देयर. एंड देन बेलीज बुक से पता चलता है मुझे कि सीनेट का मेंबर बनने के लिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सीनेट का मेंबर बनने के लिए लोकल पॉलिटिक्स में कितना स्ट्रगल होता था, और कितने वो एक दूसरे का विरोध करते थे कि कौन जाएगा और कौन बनेगा. सो एजुकेशन वाज मोर सेंटर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देन टुडे वी एज्यूम. आज तो वो सब कॉमन अवेलेबल कमोडिटी बन गई है, लेकिन दैट टाइम इट वाज ए कमोडिटी विच एवरीबडी कैन नॉट हैव. सो दोज हु हैड, they aspire for that, they struggle to get it, and so there were center and but different. इलाहाबाद को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एजुकेशन का ही क्यों इतना रिकॉग्नाइज सेंटर बना. कानपुर बना ट्रेड का, कानपुर गॉट द इंडस्ट्रीज एंड ऑल दैट. इलाहाबाद रिमेन फॉर अस ओन आइडेंटिटी एज ए लिटरेचर का सेंटर. हिंदी लिटरेचर के बारे में आप बिना इलाहाबाद के बात ही नहीं कर सकते हो. एजुकेशन इलाहाबाद एकदम सेंटर बन गया, तो बनारस इज द सेम वे. Once the university came up, it became so important center for education. So all these transition and all that one need to look into कि कौन कब बन रहा है, किस सिचुएशन में बन रहा है, कौन से फैक्टर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, और कौन से अदर सेंटर. इनफैक्ट मिडिवल में आप देखते हैं बनारस के पास जो जौनपुर था, पूरे सल्तनत पीरियड में इट वाज द मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन, which then disappear, was no longer an important center of education. So ये सब जो चीज़ें हैं, जो ट्रांजिशन, one need to look into that. And that is very interesting what you are saying कि किस में ऐसा हो रहा है, जो पुराने रूट्स जिसके हैं. हरिद्वार का आप देख लीजिए, बहुत पुराने रूट्स हैं, लेकिन इट्स मोर ड्यूरिंग द कुंभ, और बहुत छोटा उसके अलावा वो कस्बा है. अदरवाइज इट्स अ रिलीजियस पिलग्रिमेज सेंटर, जिसको मिल्टन सिंगर और ब्राउन, रेडक्लिफ इत्यादि कह रहे हैं कि वो किस कैटेगरीज के सेंटर हैं, जो दे आर देयर, दे सर्व देयर पर्पस. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द कुंभ मेला होगा या अर्ध कुंभ मेला होगा, दे आर अ थ्राइविंग ट्रेड सेंटर. But other time they don't have that kind of role to play. So with these shifting roles that we need to look into from different perspectives. Yes. और किसी के हैं क्वेश्चन? थैंक यू धीरेन्द्र.
थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें। और थैंक यू, आई enjoyed a lot, and thanks to Yogesh and thanks to your entire team that you gave me this opportunity. I was hesitant because I generally do not get time to prepare, but as a whole it was not so bad. I interacted or many questions make me now to reflect on कि कैसे इनको address करना है इस तरह questions. Thank you very much. Thank you Dhirendra, it was very rich. I hope इस पे conversation हम जारी रखेंगे. ठीक, thank you.